बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है। आज हम एक बार फिर एक बहुत एक्साइटिंग शो के साथ हाजिर हुए हैं, 3 लैंग्वेजेस विद वसीम। और जैसा कि आपको भी पता है, ये हमारा चौथा शो है। आज हमें एक बार फिर सरप्राइज गेस्ट और सरप्राइज होस्ट और सरप्राइज लैंग्वेजेस मिलने वाली हैं। और आज हमारे साथ होस्ट 3 होस्ट हैं और 3 गेस्ट हैं। Let's start the session. Hello everyone, my name is Mohammad Waseem Anwar. I'm from Lahore, Pakistan. We are yet back again with the exciting show. This is our fourth show. The show purpose is remove the language barrier. So let's start the show today. Our first host is I would like to invite Rekha Makanji from India. Hello Rekha ji. Hello, thank you so much, Waseem sir. It's an honor to be here with you. So I would be, my name is Rekha Makan from India, the capital of India, which is Delhi, and I'm recently residing here. And I would be representing English language as today. Thank you so much. Over to you. Thank you very much. Thank you very much, Rekha ma'am. And next show is, she's from Senegal, and I would like to invite Hawa Bokam, if I'm pronouncing correct. Hello, ma'am. How are you? You are mute, ma'am. You are mute, ma'am. Ma'am, unmute yourself. You are mute. Sorry. Good afternoon, everybody. Happy to be here. Thank you, Wasim ji, for inviting me. It is indeed a real pleasure to be here for this show that is trying to remove those barriers, language barriers. And I am from Senegal. My name is Hawa Bukum, like Adam and Eve. So Hawa, but people say Hawa, you know, we accept. And today I will talk in French, as French is the official language in my country. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. And our third host is Neera Angral from India. Hello, ma'am. How are you? Hello, Assalamu alaikum, Waseem bhai, and hello to everyone. Neera Angral, proud founder of ONPASSIVE. Today I'm representing Urdu language, and I'm very happy to the part of this 3 language show. I'm very happy. Thank you very much. Over to you. Thank you very much. Thank you very much. Rekha ma'am, would you like to introduce your guests today? Who is your guest? Yes, it's you know I'm delighted to invite the guest in English for today. Her name is Verona. I hope I have pronounced her name correctly. Verona Willis. Thank you. Thank you. Thank you. Got it. Nice to meet you. Nice to meet you as well. So let me introduce myself. My name is Verona Willis Brown. I am tuning in here from the US. And of course, it's a pleasure to be here again with Waseem as we break the barrier, the English barrier, the language barrier. Thank you so much for having me again. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. And next, Hawa ma'am, would you like to invite your guest? Of course. Thank you, Waseem, again. Today I am inviting my guest that is leader Amadou Khan. Amadou Khan is from my country also, and today we're going to speak French. Alors Amadou Khan, je suis très ravie de t'avoir comme invité aujourd'hui. Et tu veux dire quelques mots avant de commencer? Merci, Awa. I can start with English and then speak in French. My name is Amadou, as Awa say. I'm from Senegal. We are in the same team here in Senegal. And we are very pleased to meet ONPASSIVE friends around the world and connecting with them, because ONPASSIVE is a great company. That means it tells us there is no border.
and between us. So it's a pleasure to be here today. Et merci beaucoup, chers frères et sœurs de ONPASSIVE. Je m'appelle Amadou Kane, je suis du Sénégal et j'ai été invité par notre sœur Awa Bokoum. Et franchement, ça fait un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Et cela veut dire qu'en passive, il n'y a pas de frontières et c'est un plaisir d'être là. Over to you, Waseem. Thank you very much. And Neera ma'am, would you like to invite your guest? जी, थैंक यू, शुक्रिया वसीम भाई। आज मेरे यहाँ पे जो गेस्ट हैं मोहतरमा आसिया असीम जी, मैं आज आपसे बात करना चाहूंगी। सो प्लीज आप आइए, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आप आइए, मुझे आपसे बात करनी है। आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। वॉल्यूम लो है आपका। जी, मैं आयशा आसिम फ्रॉम पाकिस्तान, और मैं जो हूँ यहाँ पर उर्दू गेस्ट के तौर पर आई हूँ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का इस प्रोग्राम में, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का भी। और आप जो है मुझे बहुत खुशी है यहाँ पर आप लोग सबके साथ, सबके बीच में आते हुए, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि हम लोग जो हैं जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, जिस कंपनी के लिए हैं, तो इट्स एन ऑनर एंड आई एम वेरी मच प्राउड। बहुत ज़्यादा प्राउडनेस फील हो रही है कि मैं आप सबके बीच में हूँ। थैंक यू जी। ओवर टू वसीम भाई। थैंक यू आसिया मैम। Thank you very much. Thank you so much, Neera ma'am. So let's start the session from Rekha ji. Rekha ji, over to you. Rekha ji, I am audible. Am I audible? Yes. Okay. You're audible. Okay. Start the session. Okay. So I would have this question for you, Verona. I hope I'm audible as well. Can you hear me? Yes. Okay, wonderful. So my question is, what is your favorite product in ONPASSIVE, and why do you like it? Well, I try not to like favorites. So I don't pick a favorite. I love all the products in ONPASSIVE, but I am very passionate about education. So O Academy will always be on the forefront, and I like to serve. So O Bless is next. Thank you. Wonderful. Yes, O Academy is going to be the favorite of all. Me as a teacher as well. Yeah, wonderful. So I would like to pass on to Hawa. You can take the mic. Over to you. Merci beaucoup, ma sœur Rika. Merci, Verona. Vraiment, on est d'accord avec elle. Tous les produits sont des produits importants. Maintenant, si vous permettez, je vais d'abord demander à mon invité, Amadou Kane, de me dire un peu d'abord comment il a connu ONPASSIVE avant de lui poser d'autres questions. Merci beaucoup. Amadou, à toi, s'il te plaît. Oui, merci Awa. J'ai connu ONPASSIVE à travers une personne avec laquelle nous étions ensemble dans des réseaux sociaux. Alors, dans une compagnie, je ne veux pas citer le nom, mais ça n'avait pas marché. Alors, il m'a contacté, il me dit, tiens, il y a une société qui va venir dans l'avenir, c'est dans l'intelligence artificielle. Serais-tu intéressé? J'ai dit, mais pourquoi pas? Alors, il m'a invité au Zoom, ONPASSIVE, et quand j'ai suivi la présentation, j'étais vraiment séduit. Et cela, ça date d'un an, c'était en 2021. C'est comme ça que j'ai connu ONPASSIVE. Génial. Et depuis, tu n'as pas lâché, hein, parce que je te vois dans toutes les réunions, n'est-ce pas? Ah oui, je suis tombé amoureux de ONPASSIVE
Et c'est un plaisir de travailler aussi une personne comme toi qui n'arrête pas de me motiver et puis de m'encourager. Donc, depuis là, je suis marié avec ONPASSIVE. Merci, merci beaucoup, mon frère. Merci, on est tous motivés et on s'automotive. Bon, je vais passer la parole à ma sœur Nira Ji. Over to you, please. जी, thank you very much. जी आयशा जी, अभी मेरा आपसे सवाल है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। Over to you, आयशा वसीम जी. Over to you. Thank you. आयशा जी, आपकी आवाज जी, हाँ जी, अब ठीक है? Am I audible? Yes. yes. Okay. अच्छा, मैं I can say कि मैं जो हूँ 24 hours, I'm working 24 hours, 24/7, because मैं जो हूँ एक housewife हूँ, तो क्योंकि housewives बहुत ज़्यादा busy होती हैं, more than working women I can say, because उनके तो कुछ hours होते हैं working, जो work hours होते हैं, लेकिन हमारा जो है पूरे वक्त एक मसरूफ time गुजरता है, तो I'm pretty busy, and I have mashallah 2 daughters. दो बेटियां हैं, and मैंने MBA किया हुआ है फाइनेंस में, and मेरा जो है बिफोर माय मैरिज मैंने जो है वह कुछ जॉब वगैरह की हैं। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैंने जॉब की है एज अ असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस में, एंड उसके बाद मैंने टीचिंग भी की है, और इसके अलावा मैंने काफ़ी हमेशा यही चाहा है कि कुछ ना कुछ मैं करूं, तो आई डू सम ऑनलाइन कुछ मैंने काम भी किए हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो कि मुझे अब तक मिली है इन दिस ग्रेट कंपनी ONPASSIVE, और इससे ज़्यादा मैंने कभी कोई ऐसी कंपनी नहीं देखी और ना मैंने सुनी कि जिसके अंदर आपको हमेशा हर चीज़ की जो है एक तरह से पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा है, और जिसमें इतना जो है एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए इतना गेन है। तो ये सब चीज़ें जो हैं मुझे इस चीज़ से बहुत अट्रैक्ट किया, और मैंने ONPASSIVE ज्वाइन किया। उसके बाद से देयर वाज कोई ऐसी देयर वाज नो लुकिंग बैक, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, एंड आई एम wholly and truly with ONPASSIVE. इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करती, but after launch I really want to do a lot, जो कि मेरे plans हैं, इंशाल्लाह hopefully I'll try to do my best. बस, thank you जी। जी आयशा जी, आज आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि वाकई एक बीइंग ए हाउसवाइफ आप इतना मसरूफ रहते हुए भी आपने ONPASSIVE को बहुत अच्छी तरह से अपना टाइम भी दिया, और आपके ख्यालात जो हैं इसके लिए बहुत उम्दा हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खातून हैं जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन वो उसी दायरे में रह जाती हैं, उनको कुछ कहीं अपने पर फैलाने के लिए कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता। ये हमारे पास एक बहुत उम्दा रास्ता है अपनी जिंदगी को उम्दा बनाने के लिए। आपके ये विचार सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके ख्यालात बहुत अच्छे लगे। सो ओवर टू रेखा माथन मैम। Thank you so much, Meera. And honestly, yeah, it's a great feeling being with ONPASSIVE when you come to know about different languages, being together, sitting with all the people of different community and communicating with them and knowing much more about them. Wow, wonderful, wonderful feeling. So my question to Verona would be, how are you planning to contribute for the good of humanity with the financial freedom coming with ONPASSIVE, which it would be provided after the apples? Yes, over to you. That's an excellent question, because I was born to serve. And when I was born to serve, I know how to serve with a little bit that I don't have.
So what I have, I serve from that. So once I have an overflow, I learn to serve from an overflow to those who are around me. I am very passionate for the broken people. I am very passionate about those who are struggling. And once I have an overflow, it will be easy for me to serve even more. I start with myself. And as I start with myself, I branch out into my community. And when I branch out into my community, I branch out into the world. The world is not big. The world is very small. So once we stretch our hands and stretch our hearts, my intent is to lift up one person at a time. Because once I do that, it will be a domino effect. Because it only takes one to make a difference. Thank you. Wow, that's amazing. Yes, that's what I believe everyone being on-passivians have the same kind of feeling. And honestly, we had that feeling from our childhood, but yes, we were looking for something like on-passive. Being, a family with on-passive, we can stretch our hands as much as we want. The sky is the limit for us. Thank you so much. That was a wonderful answer. And I would like to call upon Hawa for the next question. Go ahead, ma'am. Over to you. Shukriya, Rika ji. Thank you, Verona. This is really a very good project. But I think we all agree. We have that same heart beating in every and each of us. So whatever one says, it reflects on the others. That is the beauty of ONPASSIVE. But I'm not supposed to speak English. Let me continue with my guest, my brother Amadou Khan. Amadou Khan, mon frère, tu as entendu ce que Aïcha a dit, elle est du Pakistan. Tu as entendu ce que Verona a dit, elle est des États-Unis, de même que nos autres frères et sœurs qui sont sur le plateau. Je sais que tu as un grand projet aussi à ONPASSIVE, mais je voudrais savoir d'abord qu'est-ce qui t'a vraiment le plus fasciné à ONPASSIVE et comment tu as l'intention de faire la différence au niveau de ONPASSIVE. Parce que c'est beau, chacun de nous maintenant a épousseté ses projets, comme avait dit un de nos leaders, Joseph Talla. Ouvrez les tiroirs, sortez vos projets, époussetez-les, parce qu'il est permis de réaliser ses rêves. Alors, comment tu comptes le réaliser à travers le travail que tu as eu à faire et ton expérience professionnelle? Merci beaucoup, Amadou. Merci, Awa. Thank you very much, Awa. English language is very sweet and tasty. That's why, everybody loves to speak in English. But today we're going to speak in French. Awa, merci beaucoup. Moi, ONPASSIVE, selon mon passé dans toute ma vie, j'ai eu à aider des personnes parce que j'ai travaillé dans les ressources humaines. J'ai aidé les gens à sortir de la pauvreté, à leur trouver du travail et à ce qu'ils deviennent indépendants financièrement. Donc, quand j'ai connu ONPASSIVE et avec la philosophie de notre PDG H. Moufaré, qui a un gros cœur et qui aide l'humanité, je me suis bien positionné. Mais moi, mon projet aujourd'hui, c'est mon village, là où je viens. C'est un petit village, mais les gens veulent y retourner, mais ils n'ont pas les moyens de retourner. Et si aujourd'hui, j'ai l'opportunité de gagner des revenus à ONPASSIVE, la première chose que je vais faire, c'est de les aider à avoir des maisons construites à une échelle très professionnelle, haut standing, et pour qu'ils puissent revenir au village. C'est ça mon objectif, c'est ça mon projet, sincèrement. Parce que à ONPASSIVE, il faut avoir un gros cœur pour comprendre la philosophie de ONPASSIVE. Parce que H. Moufaré nous a regroupés ici
autour de ONPASSIVE, c'est parce que tout simplement, il aime aider l'humanité. Donc, nous devons porter son drapeau à travers le monde et faire comprendre qu'il y a des personnes comme Maman Teresa et des bonnes intentions pour aider le reste de l'humanité. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Thank you, Awa. Back to you. Thank you, my brother. Merci beaucoup, Amadou. I think that in a nutshell, we just have to convey a little bit the message also to the audience here. Those who speak French will understand. You know, our brother Amadou Khan was in human resources, so he was providing people with jobs. He helped people to get out of poverty. That was his job. And with ONPASSIVE, he is very passionate to continue this work and to help. He comes from a very tiny village, but he wants them to come. He wants the youth to come back home, to come back in their village and take care of the villages. You know what people do in our countries, third world countries, they are going in makeshift boats and they die in the ocean. So he wants them to stay home and have jobs. So he's gonna build houses, a very large scale project of houses and make them remain in their territory, remain in their village, and then contribute to the development of the. And Awa, let me tell you something, Awa, I didn't mean to cut you off, but you know, this rain here is this rainy season. It was a lot of rain, and all those houses was built with mud. And when the water comes, the rain comes, it wipe out all the houses. Actually, right now I'm speaking to you, some people, they don't have home. So if I succeed in ONPASSIVE, my first goal is to help each of them have their own house. Thank you. Dis-le en français, mon frère. Oui, durant la saison des pluies passée, il y a eu beaucoup de pluie au Sénégal. Alors, quand la pluie est venue, et la pluie a ravagé presque la moitié du village parce que c'était construit en banco, en argile. Donc, actuellement, là où on parle, les gens n'ont pas de maison. Donc, si toutefois qu'on réussit avec ONPASSIVE, mes objectifs, c'est d'aider ces gens-là à construire leur maison et avoir là où habiter. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Quelle noble cause. Vraiment, que Dieu t'aide, que Dieu nous aide tous à réaliser nos rêves. Et je suis sûre que nous allons les réaliser, Inch'Allah. Thank you. And over to you, Nira ji. जी thank you मैम। जी आयशा असीम मैम जी, मैं आपसे अभी ये सवाल करना चाहती हूँ, मुझे आप ये बताएं, जो हमारे ऐश मुफारा सर हैं, हमारे सीईओ, इस शख्सियत के लिए आपके क्या ख्यालात हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी आप ये बताएं। जी वेलकम। ये इसके लिए जो है टाइम हमारे पास बहुत ही थोड़ा है। आई थिंक ऐश साहब के लिए जो मतलब जितना कहा जाए उतना कम है, और उनकी तारीफ में तो आई थिंक अभी जो है जितने भी वेबिनार्स और जितना कुछ हो रहा है, हम 14 आई थिंक 1.4 मिलियन जो लोग हैं, फाउंडर्स हैं, I think every one of us are saying prayers for him. और हमारे दिलों में जो है उनके लिए जो इज्जत है और जो उनके लिए हम दुआएं करते हैं, तो I think he is very lucky, बहुत ज़्यादा लकी हैं वो। और ये सब कुछ जो है उन्होंने जो शुरू किया, उनका जो विजन था और जो उनका कहने को देखें एक बिजनेस है, it's a company, we are here to gain something from here. हम यहाँ से सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, बट ये जो पैसा कमाने का तरीका है, ये पूरी दुनिया में हर कोई पैसा कमा रहा है। एवरी अदर बिजनेस इज डूइंग द सेम थिंग। ऐश भी यही बिजनेस कर रहे हैं और फाउंडर्स ने भी यही करना है, सबके पास पैसा आना है। बट इसके अंदर जो उन्होंने रूह फूंक दी है ना, जो उसके अंदर जो सोल है, जो इस बिजनेस में, इट्स जस्ट लाइक जैसे आप कहते हैं ना, मशीन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलके समथिंग ह्यूमनली क्रिएट करते हैं।
तो उसी तरह से उन्होंने एक तरह से ऐसी एक स्पिरिट है इसके अंदर, एक ऐसे स्पिरिट के साथ ही काम शुरू किया गया है कि इट्स नॉट ओनली एन ऑर्डिनरी बिजनेस, इसके अंदर लोगों की इतनी फीलिंग्स, इतना पैशन, एक जज्बा है। ये जो है आई एम सॉरी, इसमें जो है लोगों की पॉजिटिव वाइब्स हैं। ऐश साहब के जो है जो उनका जो विजन है, उसके साथ लोगों की उम्मीदें हैं और लोग अपने ख्वाब को पूरा होते देख रहे हैं। और हम एक 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 जो ऑर्डिनरी से बंदे को उन्होंने इतनी वैल्यू दे दी है कि वी ऑल फील इम्पोर्टेंट। हम सबको इतनी इम्पोर्टेंस मिली है, हम अपनी जगह पे अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट फील करने लगे। हालांकि अगर हम में से कोई कोई एलसी मेंबर है, कोई ग्लोबल लीडर है, बट अगर हम एक ऑर्डिनरी फाउंडर भी हैं, तो वी फील इक्वली इम्पोर्टेंट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो उन्होंने जो कुछ किया है, मुझे नहीं लगता कि कोई और कंपनी का ओनर या सीईओ कर सकता है। तो वो जो कर गए इतने अरसे में, जो ये सिर्फ 4 साल, जो हम बहुत सारे फाउंडर्स कहते हैं कि इतने साल गुजर गए और कुछ भी नहीं हुआ, ये बहुत कुछ हो चुका है। जो लोगों को मोटिवेट किया गया है जिस तरह, और एक ट्रैक पे जिस तरह लोग चल रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोग जमा हैं और हम एक ही जबान बोल रहे हैं, एक ही इतनी मोहब्बत से एक साथ मिल रहे हैं और कोई बैरियर्स सारे खत्म कर दिए हैं। तो इस कंपनी ने इतना कुछ कर दिया है लॉन्च से पहले पहले। लॉन्च के बाद तो पैसा सबके पास आना है, लेकिन जो लॉन्च से पहले हमने गेन किया है, दैट्स, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसकी इसकी कोई कीमत ही नहीं है। बस यही कह सकती हूँ कि उनको जो भी उनको अल्लाह ताला उनको उसका बहुत बहुत अजर दे। उन्होंने इतना कुछ किया है ह्यूमैनिटी के लिए, और इन फ्यूचर भी वो ब्लेस के साथ, और जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने जो उसमें हमेशा लोगों के लिए सोचा है, इसको कोई भी चीज कंपेयर नहीं कर सकती। इट्स इनकम्पेरेबल, बिल्कुल। थैंक यू जी। जी आयशा जी, थैंक यू वेरी मच। आपने सबसे पहले तो जो आपने ऐश मुफारे सर के लिए जो दुआएं दी हैं, उनके लिए आमीन। और आपके उम्दा अल्फाजों की मैं बिल्कुल बहुत तारीफ करती हूँ। रियली आपने जो भी फरमाया है, और वाकई हम सबके दिलों में उनके लिए बहुत मोहब्बत है, उनके लिए बहुत दुआएं हैं। और जैसे वो इतने सारे लोगों की जिंदगियां जो हैं उनको बदलने जा रहे हैं, तो हम बहुत लकी हैं कि हम सेफ हैंड्स में हैं। ओवर टू रेखा मैम। Thank you so much. Aisha, yes, true. We cannot have words. Words would not be enough, you know. At times we get speechless, and at times we can speak the entire day about ONPASSIVE and about for our CEO, Mr. Ash Mufare. I mean, a great personality, yeah. So yes, you were very true. And I would have the question for Verona now. And the question is, now, according to you, what is artificial intelligence and what is the meaning of its done deal with ONPASSIVE? Over to you. I love to change things up a little bit. So artificial intelligence, yes. I look at things in a way where that's attractive and it's intelligent. When you marry those two, you get awesome, awesome inventions. Awesome. So when we as human beings tap into our gifts and our talents, and we can create artificial intelligence, that by itself is saying creation is awesome. We are awesome. We as a people, when we come together, because it doesn't take one person to put this together. And when we come collectively and we create awesomeness with the intelligence that we were created with, what better way to live? And what better way to lift up humanity? What better way to serve people? What better way to share from your heart? What better way to say, hey, I can program something to do accordingly.
to help lift up humanity, it takes just us, awesome people. And as Ash put out the gifts and talent that he were born with, because we were all born with gifts and talents. And as he tapped into his, and he stretched that, because we don't stress ourselves, but we stretch our gifts and our talent. And as he put that out there, and he stretched the gifts and talent that he was given, he knew that all of that stretching, he needed more. He needed more hands. He needed more potential. And that's when he tapped into having us collectively and artificial intelligence as the next person in line. You see, artificial intelligence is what we are forming into, and we should never ever look at it negatively. We must look at it as positively, because it will ease a lot of stress off us. While we all want to have a luxurious life and we want to live an easy life, here goes artificial intelligence will work for us. So what is considered done deal? It is simple. It is finished. When something is done, there's nothing else to add on to it. It is done. When creation was happening, that is what happened. It was said, it is done. But it is not totally finished. Let us get this correct. It is not totally finished, because when something is done, that is the foundation. We will always evolve and make it total completion. Thank you. Wow, again, amazing. Thank you so much for sharing such beautiful words. I believe ONPASSIVE is done deal, and it's totally coming from heart and pure soul. So we would absolutely create a new world of humanity, and we will protect it as as our CEO, Mr. Ash Mafare, wants it to be. Thank you so much. And before passing it on to Hawa, I would like to address one thing here. Hawa is a very important word in English, in Hindi. It is one of the most important elements of life, which means air, A-I-R. We cannot survive without air. So yes, Hawa, that's your, the meaning of your name. And now over to you. Thank you. Shukriya, Rikaji. I really appreciate. Whenever I go to your meetings, people remind me my name. That means air, but also that means Eve, Adam and Eve. I know that means also breeze. And I know this famous palace in Jaipur, Hawa Mahal. That is the palace with, I don't know how many windows. That's why the names comes from there. Thank you for your appreciation. I am so delighted to be here, and Verona, you nailed it, my sister, you nailed it. 100% agreed with you. If you allow now, I'm gonna ask my brother another question. Amadou, tu as entendu tout ce qui a été dit ici, c'est impressionnant, on est tous d'accord. Mais moi, je voudrais te demander quelque chose par rapport à ce qui se passe. Qu'est-ce que tu penses de Burj Khalifa, de nos bureaux à Burj Khalifa, de nos bureaux qui sont à Hyderabad, toutes ces personnes-là qui travaillent? Qu'est-ce que tu penses de ces campagnes marketing, etc., et des produits qui vont arriver, qui sont physiques? Comment tu penses qu'on va générer de l'argent? Parce que tout le monde dit ONPASSIVE va changer le monde. Mais à ton avis, comment cela va-t-il se faire? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Awa. Vous savez, dans la vie, tout ce qu'on pense, c'est possible de réaliser. Mais à quel prix? On a vu Ash Mafare avoir cette idée grandiose au point où, tout récemment, on a vu, il a acheté un bureau dans un immeuble le plus élevé du monde, Burj Khalifa, aux 140 et quelques étages. On a vu la publicité à travers le monde entier
il a capté l'attention du monde en venant, en allant à Dubaï. Et partout maintenant, les gens ont commencé à se poser la question, qu'est-ce que c'est ONPASSIVE? ONPASSIVE, ça va révolutionner le monde, ça c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que c'est une société de technologie qui construit des produits entièrement automatiques en utilisant les dernières technologies pour nos clientèles à l'échelle mondiale. Apporter des avantages concurrentiels, innovation et des nouvelles perspectives aux défis commerciaux et techniques de la stratégie et de la conception, de la mise en œuvre, de la gestion. Nous sommes là, ONPASSIVE, pour célébrer l'innovation et les transformations de toutes les entreprises. Ce qui veut dire, dans le monde à venir, l'intelligence artificielle sera indispensable au business, aux sociétés, au gouvernement et à toute l'humanité. Donc, si vous me posez la question à savoir comment on va gagner de l'argent, je te dirais, on va gagner de l'argent en dormant au lit. Et thank you very much, Awa, for inviting me. Back to you. Thank you. I was asking him how we're going to make money. He said, while sleeping, because AI is taking care of everything. And as a reminder, c'est au 134e étage qu'on a un bureau. Et on a le dernier bureau qui est sur le toit du monde, c'est le 151e étage. C'est très important à préciser. Nous sommes sur le toit du monde et je voudrais saisir cette occasion pour vraiment féliciter le staff qui se trouve à Burj Khalifa, le staff qui se trouve à Dubaï, ceux qui se trouvent à Singapour et partout dans le monde pour le travail acharné qu'ils font. Si on est capable d'être ici, de parler tout le temps, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent pour nous 24 heures sur 24. Et vraiment, on les félicite pour le travail qui est vraiment incommensurable. Merci beaucoup, Amadou. Et je vais profiter pour passer encore la parole à ma sœur Nira. Nira, over to you, my dear. जी थैंक यू वेरी मच जी आयशा जी अभी मेरा आपसे एक जवाब मुझे आपसे चाहिए मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे हमारे ऐश मुफारिस सर अक्सर वेबिनार में कुछ अल्फाज यूज करते हैं जैसे वो कहते हैं कि दिस इज डन डील आपके इसके लिए क्या विचार हैं आप इसके लिए कुछ अपनी राय रखें ये जानना चाहती हूँ मैं जी आयशा जी जी थैंक यू जी ऐश साहब ने हमेशा से हर वेबिनार में एंड बहुत सारे फाउंडर्स ने एलसी लीडर्स ने भी हमेशा ये कहा है कि इट्स अ डन डील देखें डन डील टोटली अ डील व्हिच इज 100% इन प्रॉफिट मतलब जो आपको हर चीज में जो है चाहे आप उसमें मतलब आप बस एक दफा आ जाए और वो आपके लिए सिर्फ गेन है यू विल लूज नथिंग देयर तो दैट्स कॉल्ड अ डन डील देखिए दूसरे बिजनेसेस में और दूसरी चीजों में हमें एक रिस्क फैक्टर होता है देयर इज अ रिस्क फैक्टर कि अगर हम वहां पर काम करते हैं मे बी वी कैन लूज समथिंग हम कुछ हार भी हम कुछ हार सकते हैं हम कुछ गेन करेंगे कुछ लूज करेंगे बट ऑन पैसिव में आने के बाद हम लोगों ने ये कॉन्फिडेंस 100% हमें ये कॉन्फिडेंस हो गया है बल्कि इट्स मोर देन 100% कि वी नो दैट वी आर इन अ बेटर प्लेस हम बहुत अच्छी जगह पर हैं और हम इतने सिक्योर हैं इट्स अ डन डील बिकॉज वी फील द सिक्योर हमें पता है कि इस ट्रैक पे चलते हुए हमें आगे जो है अच्छा है सब कुछ हमने सिर्फ गेन करना है अभी देखें हम इवन बिफोर लॉन्च मैं वही बात दोबारा से रिपीट करूंगी कि हमने कितना कुछ गेन कर लिया है
तो in any way it's a done deal before launch or after launch. तो हमें तो उसके सारी समथिंग पॉजिटिविटी हमें नजर आ रही है, हम फील कर सकते हैं। तो ये तो एक जो है फाउंडर अभी फील कर रहा है, द एक्साइटमेंट एंड द पॉजिटिव वाइब्स, और आफ्टर लॉन्च तो देखें कि क्या क्या नहीं होगा। तो हम बस यही है कि डन डील को हम इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वो बिजनेस या ये जो हमारा बिजनेस है, इसमें हमें कोई भी चीज का लॉस नहीं है। इट्स समझे, इट्स विन विन सिचुएशन, 110%। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच आयशा जी। आप तो अपने सारे जवाबात जो है इतनी खूबसूरती से आपने दिए हैं। हकीकत में बोलूं तो सच में, और दिल की सारी हसरतें जो है ना वो ख्वाब बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही लग रहा है क्योंकि हम जब से ऑन पैसिव के साथ हैं, बहुत ज्यादा देर तो नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके ख्वाब जो है ना वो कहीं दब चुके थे। ऑन पैसिव में आने के बाद हम फिर से, हमारी हसरतें जाग रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने सारे इसको इतना अच्छी तरीके से आपने बताया, तो बहुत अच्छा लगा। और इसके लिए अभी मैं भी कुछ ऐसा कहना चाह रही हूँ कि यस, जो हमारे सीईओ हैं, मैं उनके लिए कुछ ये कहना चाहती हूँ कि जाहिर है कि हमारे जो सीईओ हैं उनकी मैं तारीफ के लिए मेरे पास कुछ वर्ड्स तो नहीं, अल्फाज ही नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी कहती हूँ कि तारीफ करूं क्या, आपकी कुछ अल्फाज ही नहीं मिलते। जब से मिला है ऑन पैसिव, दिल के लाखों अरमान जगे, ये है ऑन पैसिव। सो अभी मैं वसीम भाई को ओवर करती हूँ, ओवर टू वसीम भाई। अभी मेरे ख्याल में क्वेश्चन का ये सेशन अभी हो गया, तो मैं आपकी तरफ ये कहती हूँ, ओवर टू यू। Thank you, Thank you, Neeraj Neeraj. ji. Thank you Thank so you. much. Thank you, everyone. And I enjoyed this show. It was awesome show. And as usual, as our previous shows, we were thinking another languages, and we recorded some other language. So, but it always we got amazing experience. So, Rekha ji, did you like this show? You want to say something? Yes, it is awesome. It is awesome. And I would really, I mean, it was another experience, meeting with everyone and different from different countries and different part of the world, and to know more about the language. This is, I think we will learn few languages here. I believe that. Yes, yes. And Hawaji, did you like the show? Or this you first time you joined this show. So how was your experience? बिल्कुल अच्छा लगा। अच्छा। बहुत खुशी। बहुत। I like it so much. I am amazed. This is a first experience, but for the first experience, it's really awesome. I think all of us, it's visible. When a show is good, you see it on the faces of people. All of us, we are delighted, and I'm sure my guest is delighted also. Yes, yes. Thank you. I very am. much. Thank you, Waseem, for this awesome idea, and thank you, Verona, for attending all of us. Thank you, and my sister Aisha, the Nira, Reka, and everybody. When you start saying names, you are scared of forgetting some names, and you shouldn't forget anybody. You know what we do in my Very country? true. We say, whoever I did not say your name, I started with your name. Okay? Merci beaucoup. So, leader Amado. Yes. So, did you like the show? You first time joined this show. I think I experienced this idea and show, and I like very much because multi languages in one platform, and we are understanding everyone emotions, although we don't understand language. It's amazing. It's amazing. So this is, yeah, it's marvelous. It's marvelous.
let me say this. This is the first time I experienced this kind of platform where everybody come together and we try to communicate in a different language. That means we have a huge heart. ONPASSIVE put us together today. How wonderful it is for me from Senegal, me and you from India, how many miles away. And today we have one purpose, helping the humanity. This is wonderful. Yes. Before you started, you said, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. That cuts my ear. MashaAllah, this is a great thing to do, because whenever you start something, you pronounce the name of the Creator, the Lord. We have the blessing already. Thank you very much, all India. Thank you, Africa. Thank you, America. Thank you, Asia, Australia. All this is happened because Ashmo Fareh have one idea to unite the world. And this is the proof that we are here today together. And I pray God bless all of us. And when we start making money, we think about those people who are needy, because doesn't matter how big is our house, we have only one room, we have only one bed. So the rest of it is not for us. If we don't use it wisely, we're gonna leave the world and leave it behind us. People would use it in other purposes. Then we have to use it for the good purposes. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Varuna ma'am, thank you very much. You always supported me. You always supported this show. So how was your today experience? Well, I must say this in French. Merci beaucoup. Oh. Thank you so much. That it is a pleasure. My heart desire as a little girl was always to serve those who are around me. I remember as a little girl that I would share my breakfast with those who didn't have. So my heart desire was always to serve. And my heart desire was always to go to different parts of the world and deposit and share the gift that I have. So when we operate on full capacity of our heart, when we open our heart to access that which is given to us, we can bring down, we can break down, and we can as well build up a community and the world. Waseem, when you started this show, it was because it was given to your heart. And because it was given to your heart, what we have to learn to do is to open our heart. Just as Ash opened his heart with the vision that was deposited in him. It was deposited in your heart, Waseem, to bring us together. And when I can be in the US, and now I'm in Senegal, I'm in Pakistan, I'm in India, my heart is full. My heart is full, know that I am already around the world. And once I have the ticket, the literal ticket in my hand, oh yes, I will be traveling to each and every one of these countries to meet beautiful brothers and sisters that is out there. Because each and every one of you are my brothers and my sisters. Hawa, Aisha, Hamadou, Reka, Mira, all of you out there are my brothers and sisters. And what better way to have a global family than right here on ONPASSIVE. Waseem, not from my lips, I say thank you, but deeply from the depth of my heart, I appreciate you. I appreciate this platform because this is truly what I call a dream come true for me. Thank you again. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. I learned how to say that in India and in Pakistan very soon. Yes, yes. Thank you for these kind words. And Aisha, क्या कहना आपको?
आज के शो में? बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा। एंड एज एवरी इन एवरी शो मैंने हमेशा उसको बहुत ही एंजॉय करती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में ऐसा लगता नहीं है, लगता है ऐसा है कि हम वही बात कह रहे हैं या वही बात करने जा रहे हैं, लेकिन जब शो स्टार्ट होता है और सब जो हैं गेस्ट अपनी अपनी बातें रखते हैं और सवालात पूछे जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा फ्लो चलने लगता है कि ज़बरदस्त सा माहौल हो जाता है और हर एक की बात बिल्कुल एक नई बात लगने लगती है। मतलब इतना इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। मतलब इस शो में एक अलग ही बात है, लोगों की वजह से भी। और दूसरा ये कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म है जिसने हम सबको एक जगह पे लाके खड़ा कर दिया है, तो इसकी वजह से तो ऐसा लगता है कि हम सब जो हैं वो एक बिल्कुल क्लोज़ नेबर्स हैं। और अब जो है वो डिस्टेंस कुछ भी नहीं मायने नहीं रखती। तो हम लोग इतने क्लोज़ आ गए हैं, एक-दूसरे को जानने लगे हैं, इससे अच्छी बात कोई नहीं है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि अभी कोई हमारा ऑन पैसिव के अलावा और कोई मकसद भी नहीं, मकसद भी एक ही है हमारा। तो इसमें बहुत खुशी महसूस होती है और बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू मुझे इनवाइट करने का, मैंने बहुत एन्जॉय किया। थैंक यू। थैंक यू। और आपने कैसा कैसा फील कर रही है अनएक्सपेक्टेड गेस्ट बनकर? और देखो इस शो जी। का यही मजा है कि यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले कोई नहीं जानता उसने क्या रोल अदा करना है और वो शो का पार्ट बन जाता है। Before we start this show, we don't know what we have to pay the role as a host or guest or not, but we finish the recording. So another scene we see. So तो क्या कहती है आप इस बारे में कि कैसा फील होता है जब ऐसे अचानक आकर, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, शायद आपको किसी और होस्ट के तौर पर देखना चाह रहे थे या किसी और लैंग्वेज के तौर पर, और जैसे कि आप इंग्लिश होस्ट एंड गेस्ट के तौर पर आ सकती थी। तो कैसा लगता है अचानक आपको जब ऐसे इनविटेशन आती है और आप प्रिपेयर भी ना हो और आपकी फीलिंग्स होती है जो नेचुरल फीलिंग्स होती हैं, आप बता रहे होते हो। नॉर्मली हम शो के लिए तैयार होके जाते हैं, तो कैसा फील करती? एक्साइटेड भी होते हैं, साथ में नर्वस भी होते हैं, दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं। तो इससे जो है एक ज़बरदस्त किस्म की जो है ना एक नर्वसनेस और एक्साइटमेंट जो मिलके जो है ना बड़ा मज़े की कोई डिफरेंट सी बात हो जाती है। लेकिन ये है कि जब शो शुरू होता है, मैं आपको यही बता रही हूँ, तो एक ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है सबकी बातें सुन के और इतना अच्छी टाइमिंग होती है, तो उसमें ये है कि इंसान अपने आप को बहुत प्रिपेयर कर लेता है। इतने टाइम में आपको इतना अंदाज़ा हो जाता है कि आपने जो है जो बात करनी है वो आप बिल्कुल एक कैजुअल वे में बात कर रहे हैं एंड इट्स नथिंग डिफिकल्ट और बहुत ईज़ी महसूस होता है और क्योंकि आप एन्जॉय कर रहे होते हैं तो कोई मुश्किल नहीं होती। तो यही चीज़ है मतलब मज़े का शो है, मज़ा आता है। इसमें जो है जो भी रोल है मिल जाए, इसमें जो है आपको मज़ा ही आता है आगे। तो थैंक यू वसीम साहब। थैंक यू वेरी मच आयशा। एंड नीरज जी, आपको कैसा लगा शो? और आप थैंक यू वेरी मच आपकी इतनी अच्छी उर्दू के लिए, और जो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आपने बहुत अच्छी उर्दू बोली। जी थैंक यू वसीम भाई। एक्चुअली जो अभी सवाल आपने आयशा मैम से किया था, बेसिकली मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं आती है। ये तो बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऐसे ही। तो फिर भी जैसे नर्वसनेस की बात करी और बोला कि एकदम से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और एकदम से उर्दू का सेशन लेना पड़ा और बहुत अच्छा लगा। ये तो ऑन पैसिव तो ब्लेसिंग है, बेसिकली वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा और सच में ऑसम सेशन था, यूनिक आइडिया था और बहुत ही एंजॉय किया मैंने भी। और सबसे बड़ी बात है कि पहले बेशक लग रहा था पता नहीं मेरे पास उर्दू के कुछ अल्फाज आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ी बात है कि केमिस्ट्री आयशा मैम के साथ उर्दू में बहुत अच्छी रही। मैंने बहुत एंजॉय किया और सबसे जैसे हवा मैम है,
हमारे अभी नाम भी वरुणा मैम है और मैं शायद अमायडू शायद अगर मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ तो उन सर को इन सबको देख के इनसे मतलब इन सबको सुन के बहुत एंजॉय किया, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना हमारा कहीं बूम कर जाता है। बहुत बढ़िया था आज का सेशन, मजा आ गया। ओवर टू यू। Thank you very much, and I think we should keep Veruna ma'am and Hava ma'am in our every show for our spirit. So thank you very much. Thanks for everyone. So we'll see you in next any show in any form, maybe some guest in. I want Hava ma'am a single host in 3 languages. So what do you say? Why not? It's doable. Thank you very much, ma'am. So bye bye. We are so in it to win it. We finish this show to say this word. We are so in it to win it. We have a lot of. So in it to win it. We are so in it to win it. Yes. In We it, have a lot of enjoy. mileage. You know, Yes, let's- we can lift the mountain if you want to do it together. It's gonna happen. Absolutely, yes. Absolutely. Thank you. Thank you Yeah. very much. Thank you very much. And